Hello everyone. Today we are going to look at some important matrix and determinant related questions which are commonly found in competitive exam like GATE, IIT, JAM. These topics are foundational in linear algebra and play a crucial role in solving problems involving matrices, transformation and eigenvalues. In this session we will cover a variety of matrix properties including singular and invertible matrices, determinant of a scalar multiplied matrix, product of matrices. The first question is, if A is a square matrix of order n and determinant of A equal to 0, which of the following statement is true? Option first is A is invertible. ऑप्शन ए दिया है A is invertible. तो इन्वर्टेबल की डिफिनेशन होती है A मैट्रिक्स is invertible if and only if determinant of A not equal to 0. But in the question given determinant A equal to 0. So option A is incorrect. Now take option B. A is a singular. A matrix has determinant of A equal to 0 is called singular matrix. यानी जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. ठीक, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 है तो ऑप्शन बी में दिया गया है ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होता है. बट उससे पहले हम ऑप्शन सी और डी को भी वन बाय वन चेक कर लेते हैं. तो ऑप्शन सी में दिया गया है ए इज डायगोनलाइजेबल. ए मैट्रिक्स विथ 0 determinant may or may not diagonalizable. अगर किसी मैट्रिक्स के पास डिटर्मिनेंट 0 है तो डायगोनलाइजेबल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है. ठीक है, इन दिस सिचुएशन ऑप्शन सी इज नॉट वैलिड. अब ऑप्शन डी देखते हैं. ए इज ऑर्थोगोनल. तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मस्ट हैव डिटर्मिनेंट ऑफ +1 और -1. तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट हमें 0 दिया गया तो ऑप्शन डी भी गलत. तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर ए 3x3 मैट्रिक्स ए, if determinant of A equal to 5 and determinant of 2A equal to K into determinant of A, what is the value of K? Option A is 5, option B is 10, option C is 40, option D is 8. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक मैट्रिक्स 3x3 की है और उसका डिटर्मिनेंट 5 है. तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इक्वल टू K इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो हमें K की वैल्यू फाइंड करना. वी नो दैट determinant of CA equal to C power n into determinant of A. ठीक, where n is order of matrix. We using this determinant of 2A equal to 2. Here the order of matrix is 3, 2 power 3 into determinant of A. Let's take equation first and equation second. Now comparing equation first and equation second. So here we find the value of K equal to 2 power 3, which is equal to 8. So option D is correct. Now take next question. Question number 3. If A and B are 3x3 matrix such that determinant of A equal to 4 and determinant of B equal to 2, what is the value of determinant of AB? Option A is given 6, B is given 8, C is given 10 and D is given 2.
इस क्वेश्चन में ए और बी 3x3 की दो मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 4 है और डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 2 है। तब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी फाइंड करना है। वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। Then put the value of determinant of A and determinant of B, which is equal to determinant of A is 4 into determinant of B is 2, which is equal to 8. So determinant of AB equal to 8. So our option B is correct. That wraps up our discussion on the matrices and determinants, two key concepts that are essential for exam like GATE. Today we are cover important topic as singular and invertible matrix, scalar multiplication of matrix, product of matrices. I hope this explanation has helped you better understand these concepts and hope to approach similar question in your exam. If you found this session useful, don't forget to like and subscribe for more tutorial on mathematics. Feel free to drop any question or doubt in the comment below and I will be happy to address them. Good luck with your studies and I will see you in the next session. Thank you. लाइक करो शेयर करो दोस्तों को बताओ, मसोल्वर पे आओ ज्ञान लो पाओ।